हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे। तो डिफरेंशिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट की जो डिफिनीशंस हैं और उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। तो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। वी हैव एमसीक्यूज। तो आइए जरा कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। This question number one. What the writing the question number one? If limit x tending to zero, fx is equals to zero. It means the limit of the function fx is zero at the when x is tending to zero, and gx is a bounded function. Then what will be the limit of this function? It means if you have looks like you want to calculate the limit x tending to 0 of fx, and this is of g. Okay, so you know that this limit it can be written like this: limit x tending to 0 of fx, and this limit x tending to 0 of gx. So whatever the limit of gx, it will be, because this fx is the bounded function, so it will some finite value. It will be some finite value. Okay. So if you are multiplying this 0 with some this limit x tending to 0 of gx, so this will be equal to 0. Okay. So this will be some finite value. क्यों? Since gx is bounded. Gx is bounded. Okay, so this function is bounded, so the limit will be equal to 0. तो लिमिट ऑफ, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, एक की लिमिट 0 हो रही है, दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, तो उनके प्रोडक्ट का लिमिट हमेशा 0 होगा। ये आप रिजल्ट पे, तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आंसर 0। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस इज मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज। तो लेट अस सी कि मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। तो वी नो दैट कि मॉड ऑफ एक्स इज ओपन इन सच अ वे व्हेन एक्स, it will be when x is greater or equal to 0, and it will be minus of x when x is less than 0, because we are talking about the absolute value of x. So we will not take negative value. So for that, if x is negative, so we will have to multiply this minus here. Okay, तो यहाँ पर हमें इसका जब लिमिट लिखना होगा, तो वी हैव both the limit we have to calculate here, left hand limit and right hand limit. So if you are just taking, so first we are talking about left hand limit. It means we have limit when x tending to 0 minus mod of x upon x. Okay, when x is 0 minus, it means x is lesser than 0. So we will have take this mod of x will be open in this way, this negative times x upon x. So when you cancel it out, you will get this is limit x tending to 0 minus, it will be minus of 1, and you will get minus 1. It means left hand limit of this function is just equal to minus 1. Let us see what will be the right hand limit. So right hand limit, if you are going to calculate, so limit x tending to 0 plus mod of x upon x. So यहाँ पर mod of x will be open with x when x is greater than 0. What were the slightly greater than 0? So it will be limit x tending to 0 plus, it will be x upon x, and you will get 1 here. This is limit x tending to 0 plus, it will be have 1, and you will get 1. So you can see, since this left hand limit is not equals to right hand limit, what meaning of this? This limit does not exist. Limit does not exist. Okay. So this in this problem, the answer is limit. This limit extending to 0 mod of x upon x will does not exist. Okay. So this option is correct. Okay. नेक्स्ट आते हैं। इसमें इन्होंने केवल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करी है। दे आर द वैल्यू ऑफ लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस mod of x minus 3 upon x minus, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको
यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात नहीं करा है, इन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेट अस सी। तो सबसे पहले तो हम इस मॉड फंक्शन को देख लेते हैं। तो मॉड फंक्शन x माइनस थ्री, इट विल बी इक्वल टू x माइनस थ्री when this x minus 3 is greater or equal to 0, or we can say x is greater or equal to 3, and will be negative times x minus 3 when this x minus 3 is less than 0, or we can say this is x is less than 3. Okay, so modulus of x minus 3 is just open in the such a way. If you are going to calculate the limit x tending to 3 minus, and this is mod of x minus 3 divided by x minus 3. So you will have, क्योंकि हमारे पास माइनस है, इसका मतलब we are talking about taking the function value when x is less than 3, because we have approaching this 3 from the left side. So this is x tending to 3 minus, it will be opened in negative times x minus 3 divided upon x minus. So when you cancel it out, you will get a limit when x tending to 3 minus, it will be get minus of 1, and here this limit will be minus 1. So here the limit of left hand limit for this function, we are calculating left hand limit, and that will be equal to minus 1. So this answer is your correct answer. Option B is correct answer. Okay. So these are simple problems given in your textbook. That's why I have taken this problem. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस सॉल्यूशन 4। तो यहाँ पर हमारे पास यू हैव टू कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 अपॉन x प्लस। ओके, तो यहाँ पर हम एक ही ध्यान देना है कि लिमिट when x tending to 0 plus, मतलब we are approaching 0 from right side, so this 1 upon x will be tending to plus infinity. When you are calculating when x tending to 0 plus, okay, and you have taken minus 1 upon x, okay, you have taken negative of this, so this will be approaching to minus infinity. And we know that if x if x is tending to minus infinity, then e की पावर x will be tending to 0. तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लिमिट दिस e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1 अपॉन x पे, तो वी कैन सी कि दिस विल बी e पावर प्लस इन्फिनिटी, एंड दैट विल बी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वी विल गेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक ट्रिक लगाएंगे। व्हाट विल बी द ट्रिक? दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस वी टेक e की पावर 1 अपॉन x आउटसाइड। Okay, so we will remains 1 minus or e power minus 1 upon x will be there. And similarly, from here we will take e power 1 upon x is outside, so it will be remains 1 plus e की power minus 1 upon x. Okay, तो अब हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर रहता है हमेशा, it will be never be 0, so we will cancel it out. We will cancel it out. So what will remains? It will be equal to limit x tending to 0 plus, and this is 1 minus e की पावर minus 1 upon x divided by 1 plus e की पावर minus 1. अब देखिए, we are applying the limit x tending to 0 on this minus 1 upon x. So you will be, so because this minus 1 upon x will be tending to you can say 1 upon x will be tending to minus infinity. So if this is tending to minus infinity, then this e की power minus 1 upon x will be tending to 0. You can see you can write like this, limit 0 tending to this, then e power minus 1 upon x will be tending to 0. So from here you will get 1 minus 0 divided by 1 plus 0, and from this you will get 1. Okay, so limit of this function you can say from right hand side, right hand limit of this function is at 0 is equals to 1. So this is your
right hand. Question of option first A is correct. Okay. Next, here we have what we have. This is limit x tending to 0. We have to calculate limit x tending to 0, and this is x sin 1 upon. So यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, this is bounded function, or when x tending to 0, then x function will be tending to 0. So you will get 0 and some finite value, है ना, और it will be becomes a 0. तो this is the above case जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, सेम उसी इसमें फंक्शन रख दिए गए हैं दो, एक x और एक sin 1 upon x. तो sin फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन, सो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू 0. तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था ये. नेक्स्ट बढ़ते हैं. दिस इज ऑन अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं. अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन आर is never continuous in R, it may or may not be continuous in R, it is always continuous in R, none of these. तो it is always continuous in this R. इसको आप रिजल्ट याद कर लेते हैं. अगर हम इसको प्रूव भी करना चाहें तो we can also prove. So I'm just taking a polynomial function. Let fx be a polynomial function. It looks like this. This is a naught. I'm just taking a naught x e power n plus a1 x power n minus 1 and plus a2 x power n minus, and so on up to this is a n. Okay. So we have how many terms will be there? This is n plus 1 term, and this is the degree. So I'm taking a naught is non-zero, so degree of this function is just equal to degree of fx is just equal to. Okay. So what will be, so simply you know that for the continuity at a point, if I'm taking C, is any point from R, it can be any point, any point. कोई भी हमने point ले लिया. If you are going to calculate the value of this point, so you will get the value c की power n plus a1 c की power n minus 1, and this is a2 c की power n minus 2, and so on. You will get the value such a way. If you are going to calculate the limit when x tending to c, so in the both the cases, left hand limit and right hand limit you are applying here. So here is no point where this will be gives. So you will when you're putting the value, you will get the value of the limit. So this is a naught x c की power n, and this is a1 c की power n minus 1. So it is equal to n. So this simply you can say limit x tending to c of fx is just equal to value of the and this is for all c in this R. So it means this is continuous everywhere. It means it is always continuous in R. So एक polynomial function हमेशा एक continuous function होता है. Okay. You can also say it is also differentiable too, but continuity is remains consistent. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्या बात करते हैं? तो the function fx is defined in this way, and it is continuous at this point x equals to the then value of a. So we have to calculate value of a. So you know that the value of the function at the point 3, it will be given is a, and you calculate left hand limit or right hand limit, because limit will be exist for the continuity. So left hand limit, I'm just calculating left hand limit. So this will be limit when x tending to 3 minus this function will be x plus 1. Okay, and when fitting this 3 here, so 3 plus 1 is just equal to 4. So you can say function continuous है, so this implies LHL, left hand limit should be equal to the value of the function. It is equals to 3. So this implies this is a will be equal to 4. तो फंक्शन में जो a है उसकी वैल्यू जो है तुम्हारे पास 4 होगी. Here value of a is 4. Okay. नेक्स्ट आते हैं.
क्लासिफाई द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। तो आइए जरा डिसकंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट, you are going to calculate the limits. Okay, so first we have to go left hand limit. It means this is limit when x tending to 0 minus 0 minus is the notation when x is approaches from the left side of the negative side of the, you can say. So this is limit sign function will be this, because at 0 it's 0 only, and on another value it will be this. So this will be tan inverse 1 upon x. Okay, and we know one thing: if this limit x tending to 0 minus this 1 upon x will be tending to minus infinity. So you can see this will be equals to tan inverse, this will be minus infinity, and this minus infinity is at this minus pi by. Okay, so this left hand limit is just equal to minus pi by. What will be the right hand limit? Let us calculate. So right hand limit is just equal to limit it is x tending to 0 plus, and this is tan inverse 1 upon x. Okay, same. एंड यहाँ पर हमें एक चीज और भी पता है, लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस दिस 1 अपॉन x will be tending to plus infinity. So from here you will get this is tan inverse plus infinity, and for the plus infinity we will get pi by 2. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट बोथ आर नॉट इक्वल. So here we can see this is left hand limit is not equals to right hand limit. तो वो डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, बट बोथ आर नॉट इक्वल, इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो discontinuity है, this is of first kind. So if this type of questions appear in your exam paper, or you are solving, so you first know about when the discontinuity of the first kind, second kind, removable. जैसे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बोथ आर इक्वल, इट मीन लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट, बट फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट. तो इस केस में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, उसको रिमूव कर सकते हैं रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन की वैल्यू को रीडिफाइन करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ओके, नेक्स्ट. Okay, so that this function this effect equals to 0, f0 is 0, f0. तो बताना है किस टाइप का फंक्शन है. इट इज डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो इट इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज f0 function की value at 0 is 0, and we are going to calculate limit. When you are going to calculate limit when extending to 0, this is fx, yeah, you can say. अभी हम लोगों ने निकाला था limit extending to 0, 0, this is x sin 1 upon, so this will be equal to 0. So limit of the function when extending to 0 is just equal to 0, and that is equal to value of this function. तो इसका मतलब it is continuous when x is equals to 0. तो पहली B option is correct, but the continuity is not defined the differentiability. If वो function was differentiable, अगर वो differentiable होता तो हम continuous कह सकते थे, but continuous है तो हम डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर सकते. तो फर्दर हमें डिफरेंशियबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा.
तो आइए जरा डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट right hand derivative at the point 0. So you can have limit h tending to 0, and here you have this is the 0 plus h minus का f0 divided by h. ये right hand derivative होता है. So you are going to calculate limit. This is h tending to 0. So this is fh. F0 plus h means fh. So we can have this is h sine of 1 upon h minus 0 divided by h. So from here you can cancel this and you will get this is limit when h tending to 0. This is sine 1 upon h. And this limit does not exist. This limit does not exist. So limit right hand derivative की जो limit है वो exist नहीं करती. या you can say is right hand derivative not exist. और राइट हैंड डेरिवेटिव जिस नहीं करता इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट द 0 पॉइंट। तो यहाँ पर जिसने भी लिखे हैं तो वैसे तो सिंगल करेक्ट होता है, बट यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हैं उनके, बी और डी दोनों हम सही मानेंगे। नॉट डिफरेंशिएबल वो भी सही है, कॉन्टिन्यूअस है वो भी सही, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन जिसने लिखे हैं वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी है लिखने में, कोई बात नहीं, वी चेक इट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी मॉडुलस फंक्शन अपेयर हुआ है, तो लेट अस सी कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। तो व्हेन यू ओपन द मॉडुलस फंक्शन वी हैव चेक कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वी हैव अगेन x minus 1 when x minus 1 is greater or equal to 0, or we can say x is greater than or equal to 1, and will be negative times x minus 1 when x is less than. Okay, so if you are taking any point more than 1, it will be differentiable. If you are taking any point less than 1, it will be differentiable. But it is we have to check at x is equals to 1. तो x बराबर 1 पे अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at this point 1 is just equal to limit when this is h tending to 0, f of 1 minus h minus f1 divided by minus 1। तो यहाँ पर हम रख देते हैं जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, और क्योंकि हमारे पास फंक्शन लेस देन 1 है वैल्यू, तो हम इसके फंक्शन को लेंगे। तो इट विल बी माइनस टाइम 1 माइनस एच माइनस 1, ये हो गया। और f1 पे when x equals to 1 which will be 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, एंड इट विल बी, so this will be limit with h tending to 0, this is minus ये और ये कैंसिल, this will be h प्लस का ऊपर है और फॉर्म में माइनस है, we will get minus 1 फॉर्म। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास माइनस 1 आ रहा है। व्हाट विल बी द राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1? So you will have limit, this is h tending to 0, f of 1 plus h minus f1 divided by h। अब इसके लिए फंक्शन ऊपर वाला लेंगे, this is x minus 1 वाला। We will have limit, this is h tending to 0, in the place of x we will 1 plus h minus 1, and this will be 0 divided by h। तो इससे कैंसिल, h से h कैंसिल, we will get 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यू कैन से सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट at this point 1 is not equals to right hand limit at this point, it means not differentiable at x is equals to 1। तो x बराबर 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं।
It is not differentiable at x equals to 0. Okay, so this option is correct. जब कभी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन मिलता है तो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पर वो मॉडुलस पर्टिकुलर मॉडुलस जीरो हो रहा होता है, तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो क्योंकि उस पॉइंट को शार्प पेज देता है, शार्प पेज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, आइए 11th प्रॉब्लम पे आते हैं। 11th में क्या बोला है, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू इफ f dash a plus 0 means we are talking about right hand derivative at a। okay, so exist not equal to 0, यहाँ 0 से कोई लेना देना नहीं। f dash a minus 0 exist and not equal to 0, तो इससे भी नहीं, ये नहीं। f dash a plus h 0 and मतलब ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोथ एक्जिस्ट एंड आर इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव as well as right hand derivative should be exist and equal for the differentiable at the point x equals। so a third option is correct। next and last problem, for differentiability of a function at x is equals to a, the continuity is sufficient condition, necessary condition, necessary and sufficient, and none of these। if a function is continuous then it is not necessary कि वो हमारे पास differentiable हो, but अगर कोई differentiable function है then 100% वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहा होगा या कॉन्टिन्यूअस है, तो इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। if a function is differentiable then the function will be continuous, necessarily continuous। okay, so it is a necessary condition। okay, so this is all about your MCQ problems from your textbook that is given in the last of your chapter। okay, so this is the first unit of your differential calculus we have finished। और अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स ऑफ indeterminate forms, and further we will cover all other units, and this unit took 40 lectures, and that is covers each and every topic, each example, each exercise problem। so if you have problem or difficulty to solving the exercises, you can visit the lectures and you can able to access, and this is totally free of cost, so you can learn from here। thank you so much and keep watching, and please if अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।